So what is the score now? Top of the table this year, winner of the trophy last year. What's the secret sauce? We do this all around the year. Cricket is a big thing in India. That is in itself a motivation enough. Cricket is something that's almost like a religion in our country. It's no different for me, being an Indian. लास्ट ईयर मेरी एक ही ट्रॉफी थी, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों ट्रॉफी मेरे पास होने वाली है। यहाँ पे लालची होना बनता है, राइट? तो हमारी टीम का जॉन्टी रोड्स तो यश दबाज है। So what is the score now? So it's 14 runs in 1.3 overs. Oh, great. Thank you. Yeah, while we're sitting down for an interview, your mind and your heart is pretty sort of, committed to and, looking focused on what's happening in the ground. So we are very excited, and every match we are excited. We see our team's match. We didn't miss a single ball of our team match, and we also watch the other team's match also. Right. So, Mr. Kanodia, of course, while we'll keep checking the score in the middle of the interview every now and then, but I want to take you back to why you decided to buy a DPL team in the first place. Was it for your love that you had for the game, or was it for other reasons? I mean, what was it? See, we and our chairman, managing director, Mr. Ashok Chaturvedi, his age of 68 years, and he plays cricket today also. Every day he tried to play the cricket, and we had the inter-corporate teams. So we had a great fashion. The Mr. Chaturvedi is having a great fashion. Me also, the very great fashions of the cricket. It's just of a fashion, and the reason behind that is we want to grow the talent in our area, whether it's in Delhi or we have one team in Noida also, in the UP Cricket Association. So we want that our NCR Delhi region, the boys get the good opportunity, good platform, good infrastructure. So that is only the basics for buying a team, nothing else. No, that's an excellent idea to support the local talent and support them as much as you can. So what we're going to do is this: quickly ask you some rapid fire questions. First, check how well do you know your team and the players. So talking about the chances of your team this year, DPL lifting the trophy, how sure are you? See, I was also very basically involved from the beginning for the basically scouting the players, and then the participating into the auctions. So we had a very good strategy. We had the support staff, so we had a very good the team which we decided to which player we have to go and which player we have not to go. So we just basically everything goes like a family. So I know each and every player. And this is the answer. Then in that case, tell me, who do you think, in your opinion, the top 3 batsmen in your team? So, see, what happened in last 3 matches, you see, our one down, only 3 batsmen or 4 batsmen has batted. Middle order has not got the chance to bat. So right now, Yasdul and Doon, they are just batted brilliantly, so no other batsman got the chance. But our middle order is also very good. Okay. Jonty Sindhu and all the all-rounders are there who are doing very good. So batsman wise, if you are asking, June is there and Dul is there and Jonty is there, Saini is there, many batsmen are there. Right. And the top 3 bowlers? Tell us both pacers and spinners. See, bowlers, Simarjit is there. He was the ex-IPL. He is the marquee player. We have bought him the highest bid we had paid for him in the DPL. How much was that? 39 lakhs. Right. So he was the total highest. So we have targeted, okay, we will go with that. And the Mani Girewal is also very good performance. So the 2 fast bowler, and we have picked up the Baruka also, who is our the spinner, very good spinner. So the 2 fast bowler and the spinner. Then we have the scouted a talent. This Mr. Khurana, who is also left arm fast bowler. You will see all these 3 bowlers are doing very good. All these 4 or 5 bowlers of our teams are equally. We have bowled out twice the 2 teams, and one team we have restricted in a number. So that's the bowler and the batsmen all are doing very good. Right. And my last question to you: predict
And this question I'm going to ask everybody. So if you're going to tell me that this is an unfair question, I would still persist. And that question is, who do you think, which two teams will make it to the finals for sure? See, this is a very big tournament. Now each team has to play 10 matches. Right now we are in the middle of the tournament, so each team has either played 4 or 5 matches. So if you see the current performance, the North is doing good and West is doing good, and the Central we are also doing equally good. So I think out of these 3 teams, 2 teams should be into the top 2. Qualifying is certainly for the 4 teams will qualify. Right. But I'm just eyeing on the top 2 positions. Right. So that the top 2 gets the extra chance of the qualification into the final. So I'm predicting out of these 3, 2 will make the top 2. Right. And actually, let me make this the last question. Your message to other teams out there. See, basically, we should play good cricket. Win and loss is the part of the outcome. Yeah. And I always tell, focus on the process. That's great to hear. But on that note, thank you so much for taking the time. And of course, all the best to you and your team. Thank you. Listen, your team won the trophy last year. This time around, what do you think your chances are? We for sure want to win it again, and we will win it again. Yeah. There are new 2 teams this year, and that makes, of course, the competition a little more severe, a little more intense. What do you have to say about how DPL has progressed from year 1 to year 2? It has gone a notch up for sure, yes. But again, 2 new teams, 2 more opportunities for players to shine. So yes, we are ready for it. But this time around, you lost your captain, in the sense that the winning captain from last year, Himmat, is now not a part of East Delhi team anymore. It was a decision which we made, and we retained Anuj for a particular reason, which is that he's a wicketkeeper batsman. And there's no wicket-keeper batsman in Delhi who's better than Anuj. So we thought to have like 2 in 1. Right, 2 in 1. And obviously captain then. So it was 3 in 1. 3 in 1, yeah, excellent. And how's your team doing in the season so far? Plenty of matches still to go. I'll ask you about the chances a little later, but tell me, how do you think your team's faring so far? We are top of the table right now. Yeah. So 6 games, 4 wins, 1 loss and 1 draw, as in rain washed out. So I think we're still very good at the table, and we'll finish in top. Yeah. In fact, top. Yeah, the top position is always a comfortable position. Yes. But one can tell by looking at you that, of course, last year was a great year. And so far, so good for you as well this year. Now, this time around, which are some of the key players which you think will have an impact as far as the outcome of the tournament at the end of 12 matches is concerned? I think if I speak for my team, there are a few players which we retained, like core group, which is Anuj, Mayank, Hardik, Sujal. We retained all these players because they were the core at last year as well, and then we retained them. In fact, we bought them back. So for example, for us, it is more like a semi-new team. We still have our core team with us. Yeah. And that's obviously probably a result of the strategy that might have been put in place for this year. Oh, absolutely, yes. We knew who would really want, who we can let go. And yes, it was a very, very conscious decision. Yes, we did miss a few players which we would have loved to have in our team, but then again, as you said, 2 more teams and the players went to different teams, so it was more challenging in the auction than in the tournament. In that case, why don't you tell me which were those couple of players which you wanted to have in your team but could not at the end of the auction? It's everybody knows Simarjeet. Everybody wants Simarjeet. We wanted Simarjeet. Right. The one player which we really miss is Harsh Tyagi. We could have gone for a few more lakhs for him. Yeah. But then again, you don't get everyone you want in auction because there are 7 other players which are, bidding for those players. So, but we're very happy. We got 95% of the players we wanted. 1 or 2 is always, this is where you find new talent and you find new players to join your team and be the core group of that team. Yeah, top of the table this year, winner of the trophy last year. What's the secret sauce? It is, we do this all around the year. So I think that helps us for scouting players and identifying the best possible player for the slot. That is what is important in T20, not to buy 5 openers, 4 openers, or say for example 5 left-arm spinners, but you need to have play for the slot. And we picked play for the slot and they are performing at their number. Right. And yours seems to be a very clinical approach, very precise, very concise, and to the point. My question to you is, what made you last year decide to buy a DPL team? Cricket is a big thing in India, so I think that is in itself a motivation enough to
get into something. Which So it was more of a business decision, not so much because. It was both. We run cricket academy as well in Delhi, so we were already associated with DDC in terms of cricket. Yeah. So from there it was like a progression from having a DDC club run and then to a DPL team. Right. So And who do you think is going to be the toughest competitor for your team? I mean, we take them all very, very seriously. I would not name one. Be biased to other teams. Right. But I think everybody has a good chance, and we certainly will take everyone in the same manner as any other team. Right. On that note, thank you so much. And of course, all the best this Thank year you. as well. Thank you. Look here, we're starting. Oh, Ashray. sorry. Yeah. Yeah. Hi. Your team's not even playing. What are you watching there? You know, I think it's Central Delhi Warriors is playing Mr. Kanodia's team today. So, but, you know, Keeping an eye on the competition, you know. Yeah. Gotta get better, gotta learn, gotta analyze. That's how we've been going about it this season. So yeah. Have you watched all the matches? yeah, pretty much. I've Yeah. been following all the teams. Yeah. And how sure are you, of the chances of your team? Well, I mean, right now it's our first season. Yeah. We've had some good performances, but not always the most favorable results. So, I mean, the chances aren't looking too bright right now, but I believe in miracles. Can happen. Yeah. Anything can happen in cricket. I mean, look at what happened in the India-England series. Also, we have a fairly long time to go as well until the Yeah, of playoffs, course. So It's about halfway over halfway the tournament. through, yeah. So 5 matches. Still each. confident that we can bring it back. Right. So now let me circle back. Let me go back to why did you decide to own a team? Well, I mean, cricket is something that's almost like a religion in our country. So it's no different for me, being an Indian. I've followed it since I was a little kid. IPL, all the international games, tests, played some myself as well. So that's definitely, passion is one part of it. Yeah. And apart from that, definitely something that's so important, and I mean, that DDC is, really helping develop the sport at a grassroots level. This being a good springboard for new talent as well. I mean, it's one more of a reason in which I can help and add to the sport and be part of the community while doing it. Right. That's one of the major reasons. So let's talk about how well you know your team at this point in time. How well do you know your team members? Because yours is, of course, first season. Yeah. So tell me the top 3 batsmen for you in your team at this point in time. Well, I mean, in the last few games we've seen, I mean, Himmat's always been Yeah. the man leading us from the front. One of the main reasons was the mentality that he would bring. Wasn't after winning. he in the East Delhi Riders team which won last year? Exactly. So that's what I mean when I say that winning mentality to come and instill amongst all the players. We had high hopes from a couple of players who also unfortunately faced an injury. And then, of course, I mean, in the last game, last game, in fact, Webber did really well. Yeah. So, I mean, I think each and every one of them is really trying to use this stage to really prove themselves in every game going forward. But that right there is a bit of coup d'etat, you managing in your first season to steal the winning captain of the last season. How did you do that? I mean, it's got to come from a place of aggression, and like I said, personally for me, I mean, I am into sports. Like I said, I used to play not only cricket, football, everything, but one thing that remains consistent is a winning mentality, right? So that's something that's the one thing I really wanted to bring into the team. Yeah, because I mean, stealing the winning captain, then itself is a win. All right, not favorites, but at least the players to watch out for from your team. You can push me as much as you want, but I love them all. All right. So now let me quickly pull up some rapid fire questions for you. So if you could have any Bollywood superstar cheer for your team from the stands, who would it be and why? I mean, Shah Rukh's been a pretty good lucky charm for his team, but it's a big ask. But Right. definitely, who wouldn't want Shah Rukh on your side? So, Right. I mean, when you're wishing, why not wish for the best? fair enough. So which DPL player would win a dance competition in your opinion? Because I mean, cricket, footwork, dance, footwork. So have you seen them? Most of them play because you've seen most of the matches. Who do you think? I mean, would- footwork, we're talking mostly, I guess, about a batsman. Yeah. In that case, so our captain, definitely. Who is the funniest player in your current squad, and what's their best prank ever? Have there been pranks in the dressing room already?
I haven't been privy to the pranks in the dressing room. Okay. But from whatever my limited interaction with them have been in that, let's say, Yeah. in that zone. Who has so that far funny it's been, I think Vaibhav is quite funny. All right. Definitely. On that note, thank you so much for taking the time and talking to us. Absolutely. Thank you. So, last year, आपकी team, women's team, was winner of the trophy. And इस साल अभी तो men का टूर्नामेंट चल रहा है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं और फिर women की बात कर लेंगे. So, इस साल क्या लग रहा है? क्या चांसेस है? Men की टीम के क्या चांसेस है? थर्ड रैंकिंग टेबल पे अभी आपकी टीम. चांसेस नहीं सर, जितनी बच्चों ने मेहनत करी है और जो हमारे कोचेज़ ने मेहनत करी है वो एक दिन की मेहनत नहीं है. आप ये देखिए कि 600 बच्चों का एक पूरा बॉक्स था, उस बॉक्स में से डीडीसीए ने इकट्ठे किए 200 बच्चे. मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कह चुका हूँ, उन 200 बच्चों में से हम 20 बच्चे निकाल के लाते हैं और वो 20 बच्चों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ट्रॉफ़ी लेके जाएंगे. तो हमने अपना बेस्ट दिया है. अब ग्राउंड के ऊपर जाने के बाद बच्चों ने बेस्ट देना है. तो हमारी टीम बेस्ट है, ये हम सोच रहे हैं, ये हम कर रहे हैं. और जो बच्चों की अब तक परफॉर्मेंस है वो मतलब बताई नहीं जा सकती. वो सबके सामने प्रैक्टिकल है कि हम पहला मैच हारे, जो गलतियां बच्चों ने करी उन्होंने उसको सुधार किया. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मैच के अंदर टाइम टू टाइम वो बेटर करते जा रहे हैं. तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इस बार, लास्ट ईयर मेरी एक ही ट्रॉफी थी, तो इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोनों ट्रॉफी मेरे पास होने वाली है. यहाँ पे लालची होना बनता है, राइट? नहीं, दिस इज नॉट ए लालच, दिस इज द लालची तो वो होता है ना कि आदमी की जब रोले के ऊपर खेलते हैं तो एक गेम जीतता है तो आदमी को लगता है कि यार दूसरा गेम भी जीत जाएंगे. लेकिन एक्सपर्टीज यहाँ पे एक्सपर्ट का रोल है. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक कुछ होने वाला है. यहाँ पे जो जिस बच्चे का टैलेंट है वो नजर आने वाला है. और कई टैलेंट ऐसा नहीं है कि मेरी टीम में है, कुछ और टीमों में भी अच्छे अच्छे टैलेंट है, निकल के आएंगे, आगे जाएंगे. लेकिन मेरी नज़र तो सिर्फ ट्रॉफी के ऊपर है. करेक्ट, करेक्ट. वो लालच, भूख बोलते हैं ना, स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए, वो स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए. वेरी ट्रू. बट मेरे अंदर तो भाई साहब वो उसको लालच ये होना चाहिए कि मुझे इंडिया खेलना है, मुझे अपना बेस्ट देना है. मेरा लालच जो होना चाहिए वो सिर्फ ट्रॉफी की तरफ है और वो मेरा लालच है. वो लालच है. एकदम ऑनेस्ट एडमिशन. यस, वो लालच मेरा है. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मिस्टर गुप्ता ने कहा अभी कि कुछ प्लेयर्स और टीम में भी अच्छे हैं. तो अगर 2-3 ऐसे प्लेयर्स के आप नाम मुझे बता दें जो आप सोचते हैं कि आपकी टीम में होते तो अच्छा होता, वो कौन से 2-3 प्लेयर्स? अब तो जो हमारी टीम में है वही हमारे हैं. अच्छा. इस साल हमें उन पे मेहनत भी कर रही है काफ़ी, बच्चे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. एंड थैंकफुली हर्षित राणा पूरी लीग के अंदर जितनी मेहनत कर रहे हैं एज अ कैप्टन, वो टीम को जितना सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब हमें अच्छा लग रहा है कि इतने सीनियर प्लेयर्स भी लीग को सीरियसली लेते हुए, एंड दे आर ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन फॉर द यूथ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है. तो and that's a great thing about DPL, you know, Yeah, senior of players, players who have more experience and have played at higher levels, coaching staff में अलग-अलग roles में involved हैं और players को mentor कर रहे हैं. Having said that, मैं question को फिर से वो rephrase करके मैं आपसे पूछता हूँ कि, और वो rephrasing ये है कि tough competitors in terms of also in terms of team but also in terms of individual players जो आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में impact डालने वाले हैं. पूल टेबल के हिसाब से अगर चलें तो अभी तो सेंट्रल और ईस्ट और हमारी टीम ही बेस्ट कर पा रही है. तो अभी तो यही समझ सकते हैं कि ये 3 जो टॉप पे चल रहे हैं तो यही कंपटीटर है. हम तो अभी जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है. बाकी कौन ऑल ऑफ ए सडन क्या हो जाता है, गॉड नोस. अच्छा, और जब आप टीम मीटिंग वगैरह में जाते हो प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, तो क्या कभी ये डायलॉग मारा है वो जो दंगल मूवी वाला है कि मारी छोरियां मारे छोरों से? वो डायलॉग सिर्फ हमने वुमेन्स टीम क्लियर कर रखा है. सिर्फ उस ड्रेसिंग रूम में जाके. नॉट फॉर बॉयज. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. अच्छा, और ये जो अब हाफ नंबर ऑफ मैचेस एटलीस्ट इस स्टेज के तो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, मोर और लेस सारी टीम्स के लिए. और अभी 5 मैचेस आई थिंक किसी टीम के 4, हमारे 6 मैचेस रहते हैं. सो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. हाउ कॉन्फिडेंट आर यू बोथ ऑफ यू ऑफ योर टीम मेकिंग इट टू ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स? जब हम ट्रॉफी की तरफ देखते हैं और ट्रॉफी हम कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे, तो उसके बाद तो सारे जितने के भी पुराने क्वेश्चंस हैं और जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे. हम डिस्टिंक्शन मार्क से पास नहीं होने वाले हैं. हम बिल्कुल अभी एक मैच क्योंकि हम हार गए इसलिए 100 आउट ऑफ 100 हम नहीं कह सकते, बट आई कैन से 100 आउट ऑफ 90. स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है. 100 आउट ऑफ 90. एंड you can have any player can have a bad day. You were going to say something? Of course.
वही क्रिकेट के लिए जो कहते हैं लास्ट बॉल तक कुछ पता नहीं होता, बट स्टिल बच्चों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और एक आखिरी क्वेश्चन मुझे पूछ लेने दीजिए आपसे, और वो ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इट बिकॉज ऑफ व्हिच यू थॉट अब एक आईपीएल, एक डीपीएल टीम मुझे खरीदनी है, और जिसे करें, क्योंकि इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम, क्योंकि आपको अपने प्लेयर्स को जानना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए वो टाइम निकालना साइड में और इन्वेस्ट करना प्लेयर्स में, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? अमित भाई का डिसीजन था और दोनों का सबका जॉइंट डिसीजन था। जॉइंट डिसीजन था। बस ये है कि क्रिकेट का पैशन तो देखिए सब इंडियन, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है शुरू से एक ही स्पोर्ट को सब फॉलो करते हैं, तो वो पैशन तो है ही। और ऐसा लगा हर्षा सबकी फैमिली में, रिलेशन में, राजेंद्र जी खुद क्रिकेट खेलते थे, इनका बेटा क्रिकेट खेलता है, हमारे भी फैमिली में बहुत बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो एक सबका ये था कि एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो बच्चों ने मोटिवेट किया, उनके मोटिवेशन से हमें भी लगा कि कुछ सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ लग रही है। अब पता लग रहा है कि ये तो यूनिक है एक यूनिक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट ईयर कुछ बच्चे आईपीएल में गए डीपीएल से, इस साल बहुत सारे बच्चे होपफुल हैं और बहुत सारे स्काउट्स हर टीमों के आके हमारे साथ बैठ के वहाँ देखते हैं, दे आर सीरियसली वॉचिंग इट। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लीग अपने आप में धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और ये स्टेट लीग्स को अच्छा होते हुए देखते हुए हमें खुशी होती रहेगी। एक अपने मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। तो राइट, हाँ, खेलते तो थे ही, और फैमिली में लोग खेलते तो ही, अब खेलेंगे, मतलब खिलवाएंगे भी। लेकिन बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज बच्चों को मैं देखता हूँ, और सारे जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, तो हर बच्चा ये सोच के खेल रहा है कि मैं आईपीएल खेलूँगा, मैं इंडिया खेलूँगा, मैं ऐसे करूँगा। बट यहाँ ग्राउंड के ऊपर उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कैचेस वगैरह जिस तरीके से छोड़ते हैं, अगर एक कैच छूट गया तो समझ लीजिए कि मैच गया। और ये चीज़ें अगर बच्चे नहीं देखेंगे तो बच्चों को इसके लिए बहुत ज़्यादा जोश लाना पड़ेगा अपने अंदर। जब तक बच्चों का जोश नहीं होगा, हमारे अंदर जोश नहीं आने वाला। हमारे को ये लगता है कि ये कैच चला है वहाँ से, वो कितना टफ है हमें नहीं पता, हमें ये पता है ये पकड़ लेना चाहिए हमें ये पता है कि एक ओवर के अंदर 20 रन आने हैं, और ये प्लेयर इतनी कैपेबिलिटी रखता है, ये बना देगा। तो हमें सिर्फ उतना नज़र आता है, लेकिन उन बच्चों को भी ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर, क्योंकि 2020 मैच जो है बड़ा फास्ट मैच है, और बहुत ज़्यादा इन बच्चों को मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत में अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है। डीडीसी जो दे सकता था वो दिया, हम एज ए फ्रेंचाइजी जो दे सकते थे वो दिया। आज बहुत एक्सपेंस बैठता है एक एक बच्चे का, और उसके बाद अगर बच्चे उस तरीके की मेहनत नहीं कर रहे कि ऑल ऑफ ए सडन की जी 1 महीने की मेहनत करी और 11 महीने हम कुछ नहीं कर रहे, और हम सोचते हैं कि भाई अब डीपीएल में आ जाएंगे और अब हम आईपीएल में चले जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो टारगेट है, जो टारगेट होना चाहिए, उस टारगेट से वो चूक जाएंगे। तो उस लेवल के बच्चे अभी थोड़े से कम नजर आते हैं। तो बच्चों को मेहनत करने की इसका सोल्यूशन ये है क्या कि जो लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें भी टूर्नामेंट्स इज द डिफरेंट थिंग ब्रदर। टूर्नामेंट्स के अलावा जब तक आप 2-4 घंटे डेली की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज प्रैक्टिस करते हैं नेट के ऊपर, यू आर सेइंग इन सम प्लेयर्स दैट्स लैकिंग। यस, प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं नेट के ऊपर, नेट पे बॉलर भी प्रैक्टिस कर रहा है, बैट्समैन भी प्रैक्टिस कर रहा है, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ग्राउंड के ऊपर फील्डिंग कोई नहीं कर रहा। अब जब तक ग्राउंड फील्डिंग वगैरह नहीं होगी तब तक हमारे इंडिया समझ में आ गया मुझे, कैचिंग से आपको सबसे ज्यादा शिकायत रही है थ्रूआउट द टूर्नामेंट। इंडिया से कोई जॉन्टी रोड अभी तक मिल नहीं पा रहा मुझे, और मैं उस जॉन्टी रोड्स को ढूंढ रहा हूँ। राइट, बस सिर्फ कहने का मतलब ये है। तो एक अगर जॉन्टी रोड मेरे को अपनी टीम में मिल जाता है, वो ना बॉलर हो ना बैट्समैन हो, डजंट मैटर, अगर उसने 25 रन या 20 रन रोक दिए और 2 कैच पकड़ लिए, तो मैं ये समझता हूँ वो भी एक टीम का पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है। हमारी टीम के अंदर अनफॉर्चुनेटली बच्चा बीमार चल रहा है, तो मैं उसको जॉन्टी रोड्स की तरह से देखता हूँ। हमारी फैमिली के अंदर 9-9 साल के बच्चे भी उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो यश डबास नहीं खेल रहा अंकल, कि बेटा वो अभी थोड़ा सा बीमार चल रहा है, और जब वो खेलेगा, अगर वो कैच चल रहा है और मुझे ये पता है कि ये बहुत टफ कैच है, तो मुझे ये पक्का पता है कि वो ले लेगा, गिर के लेगा, उड़ के लेगा। तो हमारी टीम का जॉन्टी रोड्स तो यश डबाज है। आपने बहुत हाई बेंचमार्क सेट किया, बट दैट्स गुड। जॉन्टी रोड्स द ओनली मैन हु इज वन अ मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर हिज फील्डिंग। मेन चीज जो मैसेज ये भाई साहब देना चाह रहे हैं वो ये है कि बैटिंग बॉलिंग पे कंसंट्रेशन के साथ फील्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, भी ध्यान दो। वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जो लोग वॉच कर रहे हैं और जो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज है चाहे स्काउट्स हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाह रहे हो वहाँ ऐसे आपको टाइम लगेगा। I'm sure players are gonna watch this and they will know. आज दोस्त समझिए, रनिंग बिटवीन विकेट्स जो है, आज जो 1 रन की जगह 2 रन है और 2 रन होने चाहिए, वो 1 रन तक आराम से आदमी बैठ जाता है।
जब तक रनिंग बिटवीन विकेट्स नहीं चलेगा, आज आप 5 बॉलों पे अगर आप 2-2 रन ले लेते हो, 1-1 रन ले लेते हो और एक बॉल लूज बॉल मिलती है उस पर आप चौका ले लेते हो, तो आप 200 का स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हिटर ही हैं, तो स्ट्रेंथ है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, कितनी एबिलिटी से यूज़ करना है, वो एक बड़ा पॉइंट है। वो बच्चों को देखना पड़ेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनको बूस्ट कर सकते हैं। और जो इनके लिए रिक्वायरमेंट है वो DDCA इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता इनको, ये श्योर है। आपने बोल दिया है, आई एम श्योर वो देखेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि ओनर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और दैट विल बी परहैप्स द मोटिवेशन दैट दे नीड। बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you very much, bro. Thank you very much.